નથી અને સેવામાં એની આવશ્યકતા હોય છે. એટલે આપણે કીધું કે પૂજાને જો ઇનિશિયેટ કરીએ ને તો પછી મર્યાદા પ્રકારનું પાલનની આવશ્યકતા હોય છે, પણ સેવામાં એની ડિફિકલ્ટી નથી. તો એટલે એ લાઈક આપણે કીધું કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્તા પ્રયચ્છતિ એવા પ્રકારની સેવા. તો એ કયા પ્રકારની સેવા? કારણ કે which I know the seva like what Mahaprabhuji has explained કે with તનુ વિતજા. તો પણ એ આ જે તમે જે કીધું સેવા, તે કેવા પ્રકારની સેવા સમજવી? પહેલી વાત તો એ કે ભાગવતજીની એ સેવા નથી, ભાગવતજીનું ષોડશોપચાર પૂજન છે. અને એ પૂજનની પ્રક્રિયાને આપણે ભાગવતજીના પુસ્તકમાં પ્રકાશિત કરી છે. ને શ્યામુકાકાજીએ ભાગવત ચિંતન શિબિર વખતે પૂરી પ્રક્રિયાને સમજાવી પણ હતી. શ્યામુકાકાજીના વચનોમાં જો સાંભળી લેશો તો થોડું વધારે સારી રીતે સમજાઈ જશે. પણ તાત્પર્ય છે કે સેવાના અનુકલ્પના રૂપમાં જે વ્યક્તિ બ્રહ્મ સંબંધી હોય પણ પોતાના ઘરમાં ભગવત સેવા કરવી એના માટે શક્ય ના હોય પરિસ્થિતિને કારણે, તો એ વ્યક્તિ માટે ભાગવત પરાયણ રહેવાનું અનુકલ્પ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને એ અનુકલ્પના રૂપમાં એ વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં ભાગવતજીની જે પુસ્તક હોય મૂળ સંસ્કૃતની, એમને પધરાવીને અને ષોડશોપચાર પૂજન કરીને જે કંઈ પણ સામગ્રી સિદ્ધ કરી હોય ધરીને એનો પ્રસાદ લઈ શકે. અન્ન દોષોથી બચી શકાય અને બાકી ભગવદીયનો સંગ અને શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પરાયણ રહે. ભાગવતજીનું જે પૂજન છે એ પાઠના અંગના રૂપમાં કરવામાં આવે છે. એટલે એનું નિત્ય પાઠ, નિત્ય અધ્યયન, પૂજન અને ભોગ ધરીને પ્રસાદ લેવું, બસ આટલું ક્રમ રાખી શકાય. એટલે આ પૂજનની જ વાત આપ કરતા હતા, જે રીતે આપણે આ જે ષોડશ એટલે ભાગવતના પૂજનની જ વાત છે, રાઈટ? કે જેમાં ભોગ ધરીને ભોગ ધરવાનો અને પછી એનું વિસર્જન થાય અને એ જે વાત કરતા હતા આપ, તો એ ષોડશ ભાગવતના પૂજનની જ, રાઈટ? હા, એના સંદર્ભમાં કહ્યું હતું. બાકી એની પૂરી મેથડ અને એની ભાવના, પ્રક્રિયા વગેરે સર્વ ભાગવત ચિંતનની શિબિર થતી હતી ને એમાં શ્રી શ્યામુકાકાજીએ સમજાવેલી છે. એની ઓડિયો પણ છે અને પુસ્તક પણ પ્રકાશિત થઈ ગઈ છે. તો એ જોઈ લેશો તો થોડું વધારે સમજાઈ જશે. અનુકલ્પ એક એવા લોકો ઓડિયો જે છે તે ક્યાંથી મળી શકે? એ કે યુટ્યુબ ઉપર છે જ. કોઈ પણ ભાગવત ચિંતનની શિબિર વખતે સવારે નિત્ય પૂજન અને પારાયણ કરતા હતા, એમાં શ્રી શ્યામુકાજી સમજાવેલું જ છે. ઓકે રાજા. એનું મુખ્ય પ્રયોજન આ અનુકલ્પ બતાવવાનું હતું કે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું હોય ને બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી ભણવા માટે કેટલાક લોકો બહાર ગામ રહેતા હોય કે નોકરી માટે બહાર ગામ રહેતા હોય. હવે એમાં થોડી ઘણી શુદ્ધિ જો આપણે નિભાવી શકતા હોઈએ અથવા લગ્ન થઈ જાય છોકરીઓના, એના પછી કોઈના પરિવારમાં સેવા કરવાની અનુકૂળતા ન હોય, તો આ બધી પરિસ્થિતિમાં આપણું જીવન બિલકુલ અસમર્પિત ન રહી જાય એ હેતુથી ભાગવત પણ પ્રભુનું નામાત્મક સ્વરૂપ છે. અને જેને પ્રભુની સ્વરૂપ સેવા ઉપલબ્ધ નથી એને કથાપક્ષનો ઉપદેશ તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપ્યો જ છે. તો એ વ્યક્તિ જેમ આપણે ષોડશ ગ્રંથનું પાઠ અધ્યયન વગેરે કરીએ એવી જ રીતે પોતાના ઘરમાં ભાગવતજીનું પણ અધ્યયન નિત્ય કરવું જોઈએ. મહાપ્રભુજી જે આજ્ઞા કરે છે એ પ્રમાણે પઠેચ નિયમમ કૃત્વા શ્રી ભાગવતમ આદરાત. તો નિત્ય ભાગવતજીનું પાઠ અધ્યયનનો ક્રમ તો રાખવું જ જોઈએ. હવે આપણે લોકો હવે અનુવાદ વાંચીએ છીએ, પણ જે પૂજન આદિ કરવું હોય તેમાં મૂળ પુસ્તક પધરાવીને પૂજન થાય છે. તો એ ક્રમ આ હેતુથી આપણે સજેસ્ટ કરી શકીએ કે બિલકુલ અસમર્પિત જીવન આપણું રહે એના કરતા ભાગવત પરાયણ થઈને રહી શકીએ. તો એ પણ અનુકલ્પ શ્રી મહાપ્રભુજી. અને સંગ દોષ માટે તો એ વાત તો છે જ કે વૈષ્ણવોનો સંગ રાખીએ અને અવૈષ્ણવોના સંગથી બચવું. તો અન્ન દોષ અને સંગ દોષ જે
બે મુખ્ય દોષ છે આપણા ભક્તિભાવમાં બહિર્મુખતા લાવવા માટેના, એમનાથી બચી શકાય. અને ભાગવત પણ સ્વરૂપ છે પ્રભુનું જ નામાત્મક સ્વરૂપ, તો ભાગવત પારાયણ રહેવું એ પણ પ્રભુના નામાત્મક સ્વરૂપની સાથે કમસે કમ જોડાયેલા તો રહે, બહિર્મુખતા તો ના આવે. બહાર ગામ નોકરી માટે રહેતા હોય, ભણવા માટે રહેતા હોય અને એવી સામાન્ય શુદ્ધિ આપણે નિભાવી શકતા હોઈએ, પવિત્રતા, તો આ પ્રકારના ક્રમને શરૂ કરી શકાય નિત્ય. પ્રભુની સ્વરૂપ સેવા કરતા આમાં થોડી સરળતા છે. પરિવારના લોકો ઇનકેસ પ્રતિકૂળ હોય કે અનુકૂળ ના હોય તો પણ આટલું ક્રમ તો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં નિભાવી જ શકે. જી રાજા, તો આપે જે શાસ્ત્રીય વર્ણાશ્રમ ધર્મના નિયમની જે વાત કરી હતી, તો એ પૂજામાં હોય તો એ મર્યાદાનું પાલન કરવું જરૂરી છે, એવી જે વાત કરી તો એ કયા સંદર્ભમાં કરી હતી? એટલે કરી કેમ કે ભાગવતજીની પૂજન પ્રક્રિયામાં ષોડશોપચાર પૂજનમાં પુરુષ સૂક્તનું પણ પાઠ થાય છે. એ પુરુષ સૂક્તનું પાઠ સ્ત્રી શૂદ્રો ના કરી શકે, તો એને સ્કીપ કરીને અને કરવું પડે. બાકી જે પૂજા પ્રક્રિયાનું બીજું ઓપ્શન પ્રશ્નકારે પૂછ્યું હતું, એમાં એમણે એ વાત સજેસ્ટ કરી હતી કે શાસ્ત્રમાં જેમ વિષ્ણુ પૂજાની પ્રક્રિયા છે એમાં આવાહન અને વિસર્જનની, એ પણ પ્રક્રિયા જેમ ભાગવતજીનું કરીએ તો એમ કેમ ના કરી શકીએ. ઠાકોરજીનું કોઈ સ્વરૂપ પધરાવીને અને આવાહન વિસર્જનની પ્રક્રિયાથી પૂજન કરવું. તો એના માટે મેં વાત કહી હતી કે ત્યાં પણ ફરીથી એ જ બધી વર્ણાશ્રમની મર્યાદાઓ શાસ્ત્રીય પૂજા પ્રકારની અંદર આવે. એ નિત્ય પૂજન પછી વિધિસર એ જ બધા પદાર્થોથી થવું જોઈએ, પ્રતિષ્ઠા વગેરે. એ બધું જો અવોઇડ કરવું હોય ને કરવું જોઈએ પણ આપણા સાંપ્રદાયિક મહાપ્રભુજી બતાવેલા સાધનોની મર્યાદામાં, તો ભાગવત પારાયણ રહેવું આ મહાપ્રભુજીનું બતાવેલું અનુકલ્પ છે, એને આપણે ચૂઝ કરવું જોઈએ બીજા કોઈ સાધનોને ઓપ્ટ કર્યા કરતા. જી રાજા, ક્લિયર થયું. ગોપી કરે છે તું આજે? હા રાજા, તને પણ કરું? હા કર. આ સર્વાત્મ ભાવના પ્રકારોથી ને? હા, ત્યાંથી. હા, શ્રી ભાગવતમાં ભગવત સંયોગ અને ભગવત વિયોગ આમ બંને અવસ્થામાં ભક્તોને થનારા સર્વાત્મ ભાવના અનુભવનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. સંયોગ એટલે મિલન, ભેટો, મળવું કે સાક્ષાત્કાર થવો તે. વિયોગ એટલે વિપ્રયોગ એટલે વિખુટા કે અલગ પડવું તે. સર્વાત્મ ભાવ બે રીતે બતાવવામાં આવ્યા છે, એક તો ભગવત સંયોગ વખતે અને ભગવત વિયોગ વખતે. સંયોગકાલીન સર્વાત્મ ભાવ, ભગવાનનો સંયોગાનુભવ ભક્તોને અવતારકાર અને અનવતારકારના ભેદથી બે પ્રકારે થતો હોય છે. અવતારકાળમાં અર્થાત ભગવાન જ્યારે ભૂતળ ઉપર અવતાર લેતા હોય છે ત્યારે જે ભક્તોને ભગવાનના દર્શન, સેવા વગેરેનો અવસર સાંપડે છે તેમને ભગવાનના સંયોગનો અનુભવ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. મતલબ અવતારકાળમાં પ્રભુના સાક્ષાત દર્શનથી જ અને એમની સેવા કરવાથી જ એમના સંયોગનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું અનવતાર કાળમાં અર્થાત જે સમયે ભગવાને અવતાર લીધો નથી હોતો તે સમયે, દાખલા તરીકે કળિયુગમાં અત્યારે પ્રભુની સ્વરૂપ સેવા કરનારા ભક્તોને જેટલો સમય તેઓ પ્રભુ સેવામાં હોય છે એટલો સમય પ્રભુના સંયોગનો અનુભવ થતો હોય છે. મતલબ અત્યારે જયારે અનવતાર કાળ ચાલે છે ત્યારે પ્રભુની સ્વરૂપ સેવાથી અને પ્રભુની સ્વરૂપ સેવાથી પ્રભુના સંયોગનો અનુભવ થાય છે. વેણુ ગીતના સુબોધિની શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિરચિત શ્રી ભાગવત પુરાણની વ્યાખ્યામાં બધી ઇન્દ્રિયોના ભગવાનમાં વિનિયોગને સર્વાત્મ ભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. વેણુ ગીતની સુબોધિનીતિમાં બધી ઇન્દ્રિયનો વિનિયોગ પ્રભુમાં થાય ત્યારે તેને સર્વાત્મ ભાવ કહેવામાં આવ્યો છે. તદનુસાર વાણીથી ભગવાનની સાથે સંલાપ મતલબ વાતચીત, આંખોથી દર્શન, બાહુઓથી ભગવાનનું આલિંગન,
હાથો વડે ભગવાનની સેવા, ત્વચાથી ભગવાનનો સ્પર્શ, કાનથી ભગવાનની વેણુના સ્વરનું શ્રવણ, પગ વડે ભગવાનના નિકટ જવું વગેરે આ સંયમકાલીન સર્વાત્મ ભાવનું વર્ણન છે. મતલબ અહીંયા બધી ઇન્દ્રિયોનો પ્રભુ સાથે કેવી રીતે વિનિયોગ કરવો ને એ બતાવવામાં આવ્યું છે. કરું આગળ? સર્વાત્મ ભાવનું સ્વરૂપ અને સર્વાત્મ ભાવની જે ડેફિનેશન્સ છે એને આગળ આપણે અહીંયા સમજ્યા. અને સર્વાત્મ ભાવ એ આપણી ભક્તિની फलावस्था છે, જે हिंदी में जे फलावस्था का निरूपण अलौकिक सामर्थ्य, व्यसनोत्तर कृतार्थता, मानसी सेवा, फल निरोध आदि के रूप में किया गया है. अब सर्वात्म भाव के प्रकार में जैसे हमने पहले बात समझी कि सेवा और कथा इन दोनों ही पक्षों के द्वारा चित्त की कृष्ण प्रवणता सिद्ध की जा सकती है. और जैसे सूरदास जी आदि के उदाहरण से हमने ये बात समझी कि एक स्टेज को क्रॉस कर जाने के बाद सेवा पक्ष के द्वारा जो भक्त को प्रभु के संयोग का अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव कथा पक्ष में परायण व्यक्ति को भी हो सकता है. जैसे सूरदास जी के उदाहरण से हमने बात समझने का प्रयत्न किया था कि सूरदास जी भी अंध थे, नेत्रहीन थे और अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रभु सेवा कर पाना उनके लिए संभव नहीं था. फिर भी उनके चरित्र को हम देखते हैं, उनके द्वारा रचित कीर्तनों को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभु की प्रत्येक लीला प्रत्यक्ष ही थी और उन्हें कभी भी प्रभु के विरह का अनुभव हुआ हो, ऐसा हमें उनके पूरे चरित्र में से कहीं समझ में नहीं आता है. तो विप्रयोग और संयोग का फल प्रभु किस जीव को किस अधिकार के अनुसार देना चाहते हैं ये भगवान डिसाइड करते हैं. परंतु बेसिकली सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत् यावत् जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम, इस वचन के अनुसार हमारा चित्त कृष्ण प्रवण हो जाए ये फल है. सेवा मुख्य साधन है और सेवा के अनुकल्प के रूप में कथा पक्ष प्रपोज किया गया है. इसलिए उसके प्रकारों में यहाँ ये समझा रहे कि सर्वात्म भाव के भी इसीलिए दोनों प्रकार के स्वरूप हैं. संयोगकालीन सर्वात्म भाव भी है और विप्रयोगकालीन सर्वात्म भाव भी है. वैसे संन्यास निर्णय में श्री महाप्रभु जी ने विप्रयोग का स्वरूप, वहाँ क्या साधन विप्रयोग के अनुभव के हेतु से किया जाता त्याग, इन सबको बहुत डिटेल में समझाया है. वो डिटेल हम जब वो ग्रंथ पढ़ते हैं तभी समझ में आएगी. यहाँ जितना विषय है उतना ले लेंगे. पर यहाँ ये बात दोनों पक्ष से समझाई गई है. अवतार और अनवतार काल के भेद से इसे दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि अवतार काल में प्रभु जब भूतल के ऊपर प्रकट थे और तब भक्तों को प्रभु के दर्शन, सेवा आदि का जो भी अवसर प्राप्त होता था, वो उसमें भगवान के संयोग का अनुभव उन्हें प्राप्त होता था, जैसे व्रज भक्त गोपी जन आदि को. अनवतार काल में जब प्रभु का अवतार काल नहीं है, तब कलयुग में महाप्रभु जी की कृपा से हमें हमारे घर में प्रभु सेवा करने का लाभ प्राप्त हो रहा है. इसलिए हमारे घर में विराजते जो सेव्य स्वरूप हैं, उन सेव्य स्वरूप में और कृष्ण में कोई अधिकता या न्यूनता नहीं है, दोनों स्वरूप एक ही हैं. इसलिए हम हमारे घर में जिनकी सेवा कर रहे हैं वो साक्षात कृष्ण है. इसलिए अवतार काल में और अनवतार काल में प्रभु के संयोगानुभूति में कोई भेद हो ऐसा नहीं है. अभी के लिए हमारा उतना अधिकार नहीं है करके हमें ऐसे प्रभु के संयोग की अनुभूति नहीं हो पा रही है. पर 14 वैष्णव की वार्ताओं में हम देखते हैं कि जिन जीवों का ऐसा अधिकार था, अर्थात जिनकी भक्ति व्यसन पर्यंत वृद्धि को प्राप्त हुई, उन्हें प्रभु के जैसा सानुभाव का अनुभव हुआ, वो ऐसा ही था कि जैसा व्रज भक्तों को हुआ करता था. तो इसलिए ये संयोगकालीन सर्वात्म भाव अवतार काल में प्रभु प्रकट थे तब गोपीजनों की अनुभूति थी, और अनवतार काल में हम हमारे घर में जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी हमें प्रभु के संयोग की ऐसी ही अनुभूति होती है. इसलिए श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में ये आज्ञा करते हैं कि सभी इंद्रियों से का भगवान में विनियोग को ही सर्वात्म भाव कहा जाता है. इसलिए वाणी के द्वारा प्रभु के साथ वार्तालाप करना, अपने आंखों से प्रभु के दर्शन करने, प्रभु का स्पर्श, प्रभु की सेवा, प्रभु के स्वर को सुनना, ये सब संयोगकालीन सर्वात्म भाव के स्वरूप हैं कि जिसमें हमारी सभी इंद्रियों के द्वारा प्रभु के स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है. अवतार काल में भी होता है और यही बात अनवतार काल में भी होती है. तो ये संयोगकालीन सर्वात्म भाव का स्वरूप हुआ.
करूँ आगे राजा? हाँ हेलो राजा। विप्रयोगकालीन। हाँ बोलो। राजा हम देखते हैं कि जो सर्वात्म भाव जिसको सिद्ध होता था, ऐसे भक्त कोई कोई स्वस्थ दशा में होते हैं और कोई अस्वस्थ होते हैं, मतलब व्यवहार में। तो उन दोनों में क्या समझना है? मतलब उसमें कोई उच्च नीचता है या कोई क्या परिस्थिति है वो? नहीं, इसमें ऊंच नीच वाली कोई बात नहीं है, सब यथाधिकार है। जैसे आस्करण राजा का हम देखते हैं तो उन्हें तो कोई विप्रयोग की अनुभूति जैसा कुछ नहीं था। घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, पूरी स्वस्थता है, पूरी अनुकूलता है, कोई विरहानुभूति जैसी भी कोई अवस्था नहीं थी। फिर भी अचानक अपने घर से बाहर पधार जाते थे, उन्हें ये सब पता नहीं चलता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गोसाई जी के जो वचन है उनसे हमें ये बात समझ में आती है। तो ऐसी अस्वस्थता संयोग का अनुभव करते हुए भी उन्हें उनमें दिखाई देती है। और जो विप्रयोग का अनुभव करते हैं उनके विषय में तो महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में आज्ञा करते हैं कि विकल्पता और अस्वस्थता है वो ऐसी सर्वात्म भाव की अवस्था में बहुत सहज है और भक्त को इनकी अनुभूति होती है। विप्रयोग का अनुभव करते हैं उनके अंदर ये ज्यादा दिखाई देता है, संयोग के अनुभव करने वालों में कम होता है। पर भावातिरेक में संयोग में भी हो जाए ये भी संभव है। जैसे गोपीजनों के चरित्र में हम देखते हैं कि प्रभु ने रात्रि को वेणुनाद किया तो अपने शरीर का भी उन्हें शुद्ध नहीं रहा। तो भागते भागते सब आए तो वस्त्र का भी ध्यान नहीं, घर परिवार में किसी को कुछ कहा नहीं, बच्चों, पति, घर के कार्य सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के प्रभु के पास आ गए। अब ये भी एक प्रकार की अस्वस्थता और विकलता ही है, पर ये संयोगकालीन है, इसमें विप्रयोग की बात नहीं है। आस्करण राजा का भी कुछ ऐसा ही है। और बाकी विप्रयोग का जो अनुभव करते हैं उनमें तो विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम ऐसा करके महाप्रभु जी संन्यास निर्णय में आज्ञा देते हैं कि ये तो उनमें स्वाभाविक रूप से दिखाई देने वाली बातें हैं। और जो विप्रयोग में होते हैं भक्त, उसको कभी ना कभी सहयोग तो प्राप्त होता ही ना, क्योंकि मूल जो फल है वो तो कृष्ण स्वयं ही है। तो वहाँ पे क्या स्थिति होती है? संयोग फिर दोनों प्रकार से हो सकता है। जीवन मुक्ति के रूप में हो तो प्रभु ऐसे भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और तब वो भक्त भगवान के साथ ऐक्य का अनुभव करता है। और जो विप्रयोग का और दूसरा प्रकार ये है कि देह त्याग के बाद भगवान में उनका सायुज्य हो जाए। ये दोनों ही तरीके से अंततः संयोग तो कभी ना कभी होगा ही, उसमें कोई शंका नहीं। तो राजा जो जीवन मुक्ति में ही भगवान का संयोग हो जाए उस अवस्था को थोड़ा श्रेष्ठ मान सकते हैं? देखो, इसमें श्रेष्ठता वाली कोई बात नहीं है। फलदान करना प्रभु के सामर्थ्य में है और प्रभु की इच्छा पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या फल किस जीव को भगवान कब देना चाहते हैं वो तो भगवान डिसाइड करते हैं। संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी इतनी आज्ञा जरूर करते हैं कि विप्रयोग भी भक्ति मार्ग में फल है और उस विप्रयोग की अनुभूति में भी भक्त को कोई लौकिक विप्रयोग की तरह क्लेश की अनुभूति नहीं होती है, आनंद का ही अनुभव होता है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसकी जो विप्रयोग कालीन फलात्मक अनुभूति है उसमें कोई विक्षेप प्रकट करना नहीं चाहते हैं करके मोस्ट ऑफ द केसेस में भगवान उन्हें विप्रयोग की अनुभूति होने देते हैं। और उसके बाद जब वो भक्त की अनुभूति एक फल की सीमा तक पहुंच जाती है तब फिर भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे लोहे का गोला को जब हम अग्नि में तपाते हैं तो लोहे का गोला और अग्नि एक हो जाते हैं, उसी तरह हृदय में प्रकट भगवान और वो जीव भी एक हो जाते हैं। इतनी आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने फल के विषय में की है। वहां अधिकता और न्यूनता की बात नहीं है, जिस जीव को भगवान जैसा फल देना चाहते हैं वो देते हैं। बाकी व्यसनावस्था तक तो सभी भक्ति मार्गी समान तरीके से ही पहुंचते हैं। अब वो अलग बात है कि किन्हीं किन्हीं जीवों का भाव अलग अलग होता है, प्रभु के स्वरूप के संबंध में रुचि अलग अलग प्रकार की होती है, फलानुभूति के विषय में भी कोई पर्टिकुलर चॉइस होती है। कभी भगवान उन्हें कंसिडर करें, कभी ना करें, स्वतंत्र फल दें, कभी उनकी रुचि के अनुसार दें, ये सब वैरायटीज हो सकती हैं।
जी वर्किंग। और कोई प्रश्न है? એટલે રાજા જે પણ સેવા કરે એને ગમે તે પ્રકારનું સેવાનું ફળ તો મળશે જ, એવું રાજા સમજવાનું? फल के बारे में श्री महाप्रभु जी इतनी आज्ञा करते हैं कि भगवान एव ही फलम स यथा विर्भवेद भुवि, अर्थात पुष्टि जीव को फल के रूप में भगवान ही मिलेंगे, परंतु भगवान जीव को किस रूप में फलतया प्राप्त होना चाहते हैं ये भगवान डिसाइड करते हैं। इसमें जीव की चॉइस को प्रभु चाहे तो कंसिडर करें, चाहे तो ना करें। जी राजा। भगवान ही मिलेंगे, पर किस रूप में मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये प्रभु ही जानते हैं और प्रभु की इच्छा से करते हैं। तो इसमें कभी हमारा कोई भाव स्थिर हो किसी पर्टिकुलर प्रभु के रूप या लीला के विषय में, तो भगवान हमारी रुचि को कंसिडर करके फलदान करें, ऐसा भी हो सकता है। और कभी भगवान हमारी रुचि को कंसिडर ना करें और अपनी इच्छा अनुसार हमारे अधिकार को जानकर फल प्रदान करें, ऐसा भी हो सकता है। जी राजा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, गोपी करो आगे। વિપ્રયોગકાલીન સર્વાત્મ ભાવાનુભવ ભગવાનના વિપ્રયોગનો અનુભવ પણ ભક્તને અવતારકાળ અને અનવતારકાળના ભેદથી બે પ્રકારે થતો હોય છે। તદનુસાર અવતારકાળમાં ભક્તો જેટલો સમય ભગવાનના નિકટ નથી હોતા તેટલો સમય તેમને ભગવાનના વિયોગનો અનુભવ થતો હોય છે। મતલબ અવતારકાળમાં ભક્ત જ્યારે ભગવાનની નજીક નથી હોતા ત્યારે તેને ભગવાનના વિયોગનો અનુભવ થાય છે। જ્યારે અનવતાર કાળમાં જે ભક્તો જેટલો સમય પ્રભુ સેવામાં નથી હોતા તેટલા અનવસરના સમયમાં અથવા તો જેમને ભગવત સ્વરૂપ સેવાનો અવસર જ પ્રાપ્ત થયો ન હોય તેમને ભગવાનના વિયોગનો અનુભવ થતો હોય છે। મતલબ અનવતાર કાળમાં જ્યારે પ્રભુની સેવા ન બની શકતી હોય અથવા તો પ્રભુના અનવસર વખતે પ્રભુની સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત ન થતો હોય ત્યારે વિપ્રયોગનો અનુભવ થાય છે। ભગવાનના સંયોગ સમયે સેવાની જ્યારે વિયોગ સમયે પ્રભુના ગુણગાનને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે। ભગવદ વિયોગમાં પ્રભુના ગુણગાન કરનાર ભક્તની આસક્તિ જ્યારે ચરમ અવસ્થા પર પહોંચી જાય છે ત્યારે તેના માટે ભગવાનના વિના રહેવું અશક્ય બની જતું હોય છે। મતલબ વિયોગ સમયે मतलब भक्त જ્યારે પ્રભુથી વિયોગનો અનુભવ કરતો હોય ત્યારે રાજા સમજાણું નહીં। રાજા આ લાઈન નથી સમજાતી। રાજા આમાં વાત એ છે કે ભગવાનનો જે વિપ્રયોગ છે જેવી રીતે संयोगकालीन सर्वात्म भाव का निरूपण आया उसी प्रकार विप्रयोगकालीन सर्वात्म भाव का भी अनुभव है। जैसे वहां भी अवतार काल और अनवतार काल में बात आई उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है कि अवतार काल में भी जब भगवान वन में पधारे गोचारण के लिए अथवा जब गोकुल छोड़कर प्रभु मथुरा द्वारका पधारे तब भी ब्रजभक्तों को प्रभु के विरह का अनुभव हुआ था और उन वियोग के समय को उन्होंने भगवत चरित्रों के श्रवण मनन कीर्तन स्मरण द्वारा ही अपने उस समय को बिताया। जैसे उद्धव जी और गोपीजनों के संवाद को हम पढ़ते हैं तो वहां हमें ये बात समझ में आती है कि उन्होंने प्रभु के मथुरा पधार जाने के बाद का जो अवस्था है उसमें उन्होंने अपने प्राणों को किस तरह टिकाया। और बाकी अंतर्ग्रहगता गोपियों के विषय में आता है कि वो प्रभु के विरह का अनुभव विरह को सहन नहीं कर पाए और प्रभु के व्रज में से पधारते ही उनके देह छूट गए।
जो लोग जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ उन्होंने अपना समय प्रभु की लीला चरित्र आदि के श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा बिताया। तो भक्ति मार्ग में तो ये विप्रयोग का अनुभव भी फल रूप है। अनवतार काल में भी जिन जीवों को प्रभु सेवा उपलब्ध है उन्हें अनवसर में प्रभु के विप्रयोग का अनुभव होता है, और जिन जीवों को प्रभु की स्वरूप सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है उन्हें कथा पक्ष में रहने के कारण भी प्रभु के स्वरूप लाभ की प्राप्ति नहीं होने के कारण इनिशियल स्टेज में इंद्रियों को भगवत विरह की अनुभूति होती है। वो भी जब कथा पक्ष के द्वारा निरोध की अवस्था तक पहुंच जाए, मानसी तक पहुंच जाए, उसके बाद ऐसा नहीं रह जाता है। उसके बाद उन्हें अपनी सभी इंद्रियों से प्रभु संयोग का अनुभव करवाते भी हैं, जैसा हमने सूरदास जी के विषय में देखा। तो ये विप्रयोगकालीन सर्वात्मानुभाव है। दोनों में ही संयोगकालीन और विप्रयोगकालीन, अवतारकालीन अनवतारकालीन, इन सभी को ही भक्ति मार्ग में तो फल रूप ही माने जाते हैं। इनके विषय में अपने वहां संयोग ज्यादा मुख्य है या विप्रयोग की ज्यादा मुख्यता है ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही समान रूप से फल रूप माने जाते हैं, और भक्त को भगवान क्या अनुभव करवाना चाहते हैं ये भगवान की स्वतंत्र इच्छा पर डिपेंड करता है। कथा पक्ष वालों को हमेशा वियोग का ही अनुभव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और जो सेवा करता है उन्हें भी महाप्रभु जैसे जिन परिस्थितियों में सेवा त्याग की आज्ञा करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वृद्ध हो जाने के कारण, अशक्त हो जाने के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण, परपीड़ा के कारण, इन सभी परिस्थितियों में सेवा छोड़नी पड़े तो संयोग के बाद भी वियोग की अनुभूति हो जाती है। अथवा हमारे किसी अपराध के कारण प्रभु ही हमारी साधना में कोई प्रतिबंध खड़ा कर दे तो ऐसा भी हो सकता है। तो उन सभी परिस्थितियों का विचार किया जा सकता है। अपराध और प्रायश्चित के अलावा संयोग और विप्रयोग ये दोनों ही भक्ति मार्ग में फल रूप माने जाते हैं, और इन दोनों ही परिस्थितियों में जो भी हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें सर्वात्म भाव की अनुभूति होती है ये दोनों ही भक्ति मार्ग में फल की अवस्था है। ये दोनों सर्वात्म भाव के प्रकार आए। अब आगे और विशेष इसका निरूपण आएगा, पर आज हमारा समय हो गया तो हम उसे कल देखेंगे। इस विषय में कोई प्रश्न हो तो कल हम उन्हें डिस्कस भी कर लेंगे। एक बात इतनी कि अभी थोड़ा एफसीसी में इश्यू चल रहा है। आज तो कनेक्ट हो गया, कुछ लोगों को शायद कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हुई हो, रिकॉर्डिंग्स में भी प्रॉब्लम हो रही है, और वहाँ यूएस में भी ये कोरोना वायरस की वजह से सब स्टाफ जो है वो छुट्टी पे हैं करके वहां से हमें कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और वो लोग हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दो दिन शायद तकलीफ रह सकती है। आज तो हो गया, कल भी हो जाए ऐसा हम मान के चल रहे हैं, पर रिकॉर्डिंग देरी से अपलोड हो, लेट रिकॉर्डिंग लिंक मिले, तो ये सब प्रॉब्लम अभी कुछ दिनों के लिए हमें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जितना हम रेगुलरली चला पाएंगे उतना चलाएंगे। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे। ही राजा प्रणाम राजा।